So yeah, today's topic is mastering the logic of necessary and sufficient conditions. And I already have gotten a direct message saying कि यार किस type of question में ये pattern help करता है. Very utilitarian question. So across question types, okay, inference, strengthen, weaken, assumptions, I've seen this kind of logic used in all kinds of questions. देखो, any kind of logic, it's not कि every, let's say, 5th question, every 10th question will have the same logic. Okay, when we talk about logic, it's not that it's going to be that frequent that it appears in 10% of the questions. But whatever is a set of all the logics that are tested, this is one of the very frequent logics that is tested. So with that, let me briefly talk about myself. थोड़ी अपनी तारीफ कर दूं मैं. So my name is Chiranjeev Singh. I'm a GMAT coach. This is my website, GMAT with CJ. I graduate from Ahmedabad. These are my CAT, GMAT, and GRE scores. GRE मैंने अभी दिया October 6th. So my skills are not as rusted. So I've served as director of curriculum at GMAT, and I've been recognized as an expert on GMAT Club. Oh, there is another side of me. I got into Ahmedabad, but I was rejected by all other IIMs, and possibly a couple of reasons were that I had zero extracurricular achievements or even participation. I would not even participate in any extracurricular things. One of the reasons was that I was bad at spoken English, and second reason was I was very shy. So these things contribute to each other. I was very shy. What does shy mean? It means I was very insecure about myself. I'm using past tense. I was very insecure. Does it mean that I'm not insecure about myself now? I don't think so. I'm still, but I think the extent has really come down. So that I think is an achievement for me. But I think that is a topic for another webinar. I think I was just today thinking about this point. I was thinking possibly I should have a webinar about sharing my story of shyness and coming out of it. But yeah, I'll ask you guys what you think about that, but not right now. Okay. So now before we get started, let me ask you this question, and I would like to hear a few responses. You can unmute yourself, and if you guys can turn on your videos, that would also be great. If you don't want, I might share it publicly, this webinar. I might not. I haven't decided yet. But if you guys don't want to show your face publicly, then you don't turn on your videos. But otherwise, you can turn on your videos. That would be great. In any case, I want your responses to this question. You can just unmute yourself, or let's say you raise your hand, whoever wants to respond, and then I can unmute you, and then you can just share. At least I would want to hear from 4 to 5 people regarding this question. तो हाथ खड़ा करिए. कौन शेयर करना चाहेगा? What brings you here? So what are you expecting out of this webinar? क्यों आए हो यहाँ पे? या प्रणव? तो सर मेरा आने का रीजन बहुत सिंपल है. आई हैव गिवन वन अटेम्प्ट आई थिंक ऑन 11th September. अच्छा. तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि सीआर मतलब यूजुअली एक्यूरेसी आ जाती है जब अपन टाइम प्रैक्टिस करते हैं. बट मैंने एग्जाम हॉल में, हम 3 फ्रेंड्स, हम तीनों ने एक साथ एग्जाम हमने बुक किया था फॉर द सेम डे, एंड वी गॉट वेरी लो स्कोर इन वर्बल. I got 20, one got 24, one got 28. अच्छा. And तीनों का ESR में we somehow did very very bad in CR, and Sure. genuinely we were expecting that we will do bad in RC or SC, but पता नहीं सब inimical ही हो गया, सब उल्टा ही हो गया, and why this happened we don't know. So CR, I think now I feel it's more challenging as what I thought. It's very challenging now. So that's the reason I thought. And this conditional reasoning, I think this is also called as conditional reasoning, if I'm not wrong.
सो ये आई थिंक नया कुछ है जो मतलब आई थिंक काफी टाइम से आ रहा है एग्जाम में, विच आई एम नॉट गुड एट. So that's the reason I thought, why not to join your class? And I heard a lot about you. So yeah, that's the reason I joined it. Okay. So basically, since CR is your weaker sections, you wanted to do, and conditional reasoning in any case that you believe is tested often. So you thought, Yeah, very often, very often. Yeah. And okay. also because you are here, that's why also. Yeah. So Yes. all three of you are here, or just your friends are also नो here? सर, नो, मैं ही यहाँ पे हूँ. एक दो ने ऑलरेडी कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं, तो बट मैं Say, आई एम द ओनली. cool. यस. Thank you. Yeah, Priyam. थैंक यू. Sir, just to confirm, conditional reasoning is a part of LSAT. I feel वो अभी आ रहा है GMAT में because देखो यार, conditional reasoning is tested very frequently in a very rigorous way on the LSAT. ठीक है, it's not as rigorously tested on the GMAT, but there is nothing called कि GMAT में test नहीं कर सकते. It's also testing critical reasoning. ठीक है, and there are questions, there are already official questions जिसमें वो test हो चुकी है. Okay, it's not tested as rigorously and as frequently as it is tested on the LSAT, but it is indeed tested. LSAT का तो major part है. Acha, I thought you were going to say what brings you here. yeah. So as in no other prep company or other institute has yet touched on this topic. Okay, So आपका वो आया था LinkedIn post, so I was like, let's. okay, ठीक है, that makes sense. Thank you. Or 2-3 more people. Sir, good evening. Can I speak? Yeah, Aman. Aman here. Yeah, Aman. सर आपने पहचान लिया होगा, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ. Yeah, तो बस आपका ईमेल देखा था, तो आई थॉट आप कुछ शेयर कर रहे हैं तो और कुछ नॉलेज गेन कर सकता हूँ आपसे. right. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं सेशन में. आपके साथ कुछ क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेंगे. Right. ठीक है, good. Thank you. थैंक यू. Yes, Manvi. Manvi, you can unmute yourself. Sir, am I audible now? Yes, you are audible now. Good evening, sir. So answering your question, what brings me here? So basically, I like really go through your posts and your Telegram channel, and I am a student of GMAT Intensive also. The best part of your teaching method is that you actually go into the depth of each aspect and treating each and every question as not as a like just a question, but how and what it is testing, Right. following a very strategic approach to answer questions. So I think I would get some more new insights into this for this like in this webinar, so that's why I thought of joining this. ठीक है, so you like my teaching style and you thought you would learn a few new things. That's why you joined. Yeah, ठीक है, thank you, Manvi. thanks, sir. चलो एक और, anybody else would like to share what brings you here? Anything different from what we have already heard? Anything specific you have in mind? PJ, okay. Hello, sir. This is Pranit. I follow you on LinkedIn quite a lot. I was actually done with GMAT like 5 years ago, and what brings me here is that I would like to keep my reasoning skills sharpened. अच्छा. So nothing related to giving GMAT in the near future. अरे वाह, ये different था. Okay, nice to hear. So what are you doing these days? I moved to Australia and I'm working as an LNG, liquefied natural gas optimization advisor. You've done MBA and all that. So जब GMAT 5 years ago दिया तो उसके बाद how did you use it? Did you use it? Actually expire हो गया था and I did not use it. Okay. I was expecting to go for MBA, but my kid was born around then and it was very difficult. ठीक है. Cool. Thank you so much. Praneeth, right? Yes, sir. Thank you.
Chalo, let me get started. Good, yeah. Thank you to all the people who have contributed. So, मेरा क्या objective है यहाँ पे? My objective is that you become much clearer. So much is a caption part here. मतलब it's not just incremental improvement in your clarity. First of all, देखो मतलब we have 21 participants here, 22 including me. So of course, you will be across the spectrum in terms of understanding these ideas of necessary and sufficient condition. So kai log will be really rudimentary, will have a very rudimentary understanding of these two, and you will struggle a lot. Possibly you will need to really go through the recording also, possibly multiple times to really understand it clearly. And some of you will be really very close to a very clear understanding of these ideas. But in any case, wherever you are, my intent is that wherever you stand, you become much clearer. Okay. So that is the intent. And how would this clarity help you of this idea about necessary and sufficient conditions? एक तो simple है कि यार clarity अपने आप में it's an interesting thing to have, right? Just satisfying. So that way it will help you. And I think as somebody asked, and somebody also shared, it's tested on the GMAT. So it is entirely possible with this greater understanding, you will get a few more GMAT questions right. And let us spend less time, because if you have clarity, you will not get confused also. So you'll spend less time. So your timing may also improve. Of course, again, I'm not saying that suddenly your timing will suddenly change and all that. No. जहाँ पे भी ये ideas tested होंगे, वहाँ पे in those questions, there is a chance with improved clarity, your chances of getting it right will improve and your time per question will go down. Okay, with that, let's jump right into one example. So this is a session filled with a lot of questions for you. So I'll constantly seek your answers. So the more you participate, the more I think you'll get out of this session. So I would urge you to participate, and you'll get a few things wrong. So don't get bothered. It's fine. We are here to learn. So as much as possible, keep your intent on learning. Don't try to judge yourself, assess yourself too much. Just focus on कि क्या सीख सकते हैं. So let's say the statement is you must work hard in order to succeed. So this is a given fact for us. Okay? On the basis of this, I'll ask you a question. And how will you respond? You can respond in the chat window. You can message me directly, or you can respond to all, whatever you like. Okay? So you can give a one-to-one message me, or you can just reply to all, whatever works for you, but try to respond. So the first question is, so you have to answer on the basis of this fact or statement. You must work hard in order to succeed. And now, what if you don't work hard? So you have three options to choose from. Success, no success, cannot say. Cannot say का मतलब है could be success, but be not no success. So you have to choose one of these three options on the basis of the given statement. You must work hard in order to succeed. And the question is, what if you don't work hard? Okay. So I have a few responses. So people, anybody would like to explain, or can I cold call? I hope that's fine. So let's start with Tushar. Tushar, why do you think the answer is cannot say? Can you explain your answer? Yes, sir. Because the statement says that in order to succeed, if you have to succeed, you must work hard. But we cannot interpret that if you don't work hard, you will not succeed. So basically, X leads to Y. Then we can't interpret that Y leads to X, something like that. I mean,
maybe I'm not able to put into words, but ठीक है, तो आप कह रहे हो कि even if you don't work hard, you may still succeed. yes, correct. तो अगर बिना वर्क हार्ड के भी सक्सेस मिल सकती है, तो ये बात सही है that you must work hard in order to succeed. Yes, वो बोल रहा है work मतलब hard in order to succeed. इसका मतलब क्या है you must work hard in order to succeed? What does the statement mean? if you want success, you must work hard. Basically, You must work hard का मतलब है, Correct. आप कह रहे हो कि if you have to succeed you must work hard. इसका क्या हिंदी में क्या अनुवाद, मतलब कैसे बोलेंगे इसको? अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेहनत के बिना भी कामयाब हो सकते हैं? कांट से मतलब ऐसा, इसको ऐसा इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा. उसका हम कुछ कह नहीं सकते. पर आप कह रहे थे कि करनी पड़ेगी, तो फिर तो ऑप्शनल होगी मेहनत, राइट? आप कह रहे थे अगर कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर अब आप कह रहे हो कि नहीं, जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हो ही सकते हैं. डू यू फाइंड सम कन्फ्लिक्ट? या या प्रियम, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? No, CJ. ओके, प्रणव, यू वांट टू ऐड? I think sir might be there is must mention, so करनी ही पड़ेगी, so अगर वो नहीं करेंगे so no success can be answer. राइट. तो जैसे तुषार एक्सप्लेन कर रहा था कि इसका मतलब है करनी ही पड़ेगी, तो करनी ही पड़ेगी तो मतलब है कि अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी सक्सेस. दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. डज दैट मेक सेंस तुषार? yes sir, makes sense. What about others who are saying cannot say? Does it make sense or any doubts? Yeah, Ani, you want to ask something? CJ, if the question was framed in the purpose like you ought to work hard in order to succeed, then we could have it something like say either is possible, right? Cannot say. ठीक है, तो अभी लेट्स नॉट गेट इनटू ought to में क्या होता है, क्योंकि ought to का मतलब क्या है वो अलग से डिस्कशन हो जाएगी, राइट? But of course, if you change the words, answers will change. You're right. Fine. Yeah. Yeah, Manvi, do you want to add something? Yes, sir. So my question is that Margaret cannot say. So I was thinking that there's no information on the other factors. Like one condition is required to be successful, but there can be other reasons also for which there is no information. So like definitely working hard will give success, like as per the given Statement का मतलब क्या है? You must work hard in order to succeed. क्या मतलब समझ आया आपको स्टेटमेंट? I think hard work is a must in order to be successful. हार्ड वर्क इज ए मस्ट. मस्ट का क्या मतलब है? जरूरी है. Oh yeah, it has to be there in each situation. Yeah. I got it where I was going wrong. Yeah. I think I was thinking if it would have been you should work hard in order to succeed. तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स नॉट कि करेक्ट आइडिया इज नॉट देयर इन द माइंड, बट दिमाग में बड़ा कुछ और भी चल रहा है. ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक पीपल मेक with respect to necessary sufficient condition. The reason is simply कि the statement is not sort of a single dimensional, it's a relationship between two things. ठीक है, कि ये चीज इसके लिए जरूरी है. So there are two things. The statement is essentially not about just one thing. It's a relationship of two things. अब वो relationship of two things में a lot of people just mess up. तो it's not कि आपको must का मतलब नहीं पता. आपको एक लेवल पे must का मतलब पता है कि must का मतलब जरूरी है. You would that. But एक लेवल पे जब भी आपका दिमाग उसको पिक्चराइज करता है, मतलब and consistently, by the way, you will not make the same mistake. Sometimes you will make, sometimes you will not make. That's a trend that I've seen.
बट काफी बारी जब आपका दिमाग इसको विजुलाइज करता है, अच्छा अच्छा वर्क हार्ड से सक्सेस मिल जाएगी, पर मैं जब आपको एक्सप्लेन करने को बोल रहा हूँ तो आप कह रहे हो हाँ हाँ मस्ट है, मस्ट का मतलब जरूरी, अच्छा जरूरी है। जब मैं आपको रुकने को बोल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने को बोल रहा हूँ, देन यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, सो इट्स नॉट द करेक्ट आइडिया इज नॉट देयर इन योर माइंड, एंड that's true for almost everybody. The correct idea is there, but then there is a superficial understanding कि अच्छा अच्छा वर्क हार्ड देगा सक्सेस देगा, अच्छा अच्छा वर्क हार्ड से सक्सेस मिलता है, so you just go on with that idea. ठीक है? So whenever you find that statement is about relationship between two things, you need to really step back and think about it a little more, because the tendency will be there to make such kind of mistakes, and possibly the session will sort of help you become aware of that. ठीक है? Make Yeah. sense, Mark? Yeah, yes, sir. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. So what if you work hard? So again, type your answer in the chat window. You have to answer on the basis of the given statement. So cannot say matlab either possible. Both are the same. So you have three options: success, no success, cannot say. A lot of cannot say, and then we have couple of success. So Mihir, you said success. Yes, sir. Why success? Sir, as per this statement, I said success. And if there is another statement which can say that without working hard, don't go there. कि और क्या हो सकता है? इस statement के हिसाब से you have to answer. सर इस स्टेटमेंट के हिसाब से यू हैव टू मतलब सक्सेस ही आंसर है हाँ ठीक है. कैसे? इस statement का क्या मतलब? What does this statement mean? कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी मतलब अगर जरूरी हार्ड वर्क ही जरूरी है सक्सेस के लिए हार्ड वर्क ही जरूरी है, हार्ड वर्क के अलावा कुछ और नहीं चाहिए तुम्हें? जी ये कहाँ बोला है कि सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से कि यू मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड तो आई अंडरस्टैंड कि वो कह रहा है वर्क, हार्ड वर्क चाहिए, जी पर सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये भी स्टेटमेंट कह रही है? नहीं ये तो नहीं कह रही ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ये कह रही है कि हार्ड वर्क चाहिए सक्सेस के लिए, जरूरी है हार्ड वर्क, राइट? जी ठीक है, तो जरूरी है, बात सही है. तो फिर अगर हार्ड वर्क करेंगे तो फिर सक्सेस पक्का मिल जाएगी? हाँ एज पर दिस स्टेटमेंट कैसे? उसने कहा था हार्ड वर्क जरूरी है, पर उससे ये कैसे पता चल रहा है कि हार्ड वर्क करने से सक्सेस पक्का मिलेगी? If I tell you कि you have to have a GMAT score to get into a B school, you must have a GMAT score to get into a B school, कि GMAT score compulsory है, right? जरूरी है. का मतलब ये भी है कि GMAT score आ गया तो पक्का B स्कूल में मिल जाएगा? नहीं क्यों नहीं? तो क्या डिफरेंस है मेरी पैरेलल स्टेटमेंट में और इसमें? जीमैट स्कोर के अलावा भी कुछ चाहिए होगा वो और कुछ एडमिशन के तो यहाँ पे वर्क हार्ड के अलावा कुछ और नहीं चाहिए हो सकता? चाहिए हो सकता है तो फिर हाउ कैन यू बी श्योर कि सक्सेस मिल जाएगी? एक्सप्लेन कर सकते हैं यू वांट टू चेंज योर आंसर? सर मतलब इतना क्लियर नहीं है कि मैं चेंज करूं ठीक है, देखो जैसे उस केस में था कि GMAT स्कोर होने के बावजूद भी यू मे नॉट get into the B school, right? There may be other things, right? जी सर Similarly, यहाँ पे भी वर्क हार्ड चाहिए सक्सेस के लिए, लिखा ही हुआ है वो तो, बट क्या हाँ वर्क हार्ड के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ये तो नहीं पता हमें.
बिल्कुल नहीं पता। तो अगर वर्क हार्ड कर लिया, अब सक्सेस क्या पक्का मिलेगी? हमें पता ही नहीं अब और क्या क्या चाहिए हमारे पास, वो है या नहीं है। हाँ सर। डज दैट मेक सेंस? यस सर, मेक सेंस। ठीक है ओके। मानवी, डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. So the thing was, my reason for marking is incorrect. I just read it and I marked it like in a hurry. I paused for 10 seconds. I could answer it correctly. या तो थोड़ा शांति धैर्य से काम करें। Yeah. ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो अब the context of the question is, what if you haven't succeeded? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, worked hard, didn't work hard और cannot say. तो you can type out WH, DWH, cannot say. You can type abbreviations also, cannot say. A lot of cannot say. He didn't work hard. What about others? ठीक है, तो प्रणव कैसे didn't work hard? आप ही अलग हो यहाँ पे। सर मतलब इट मस्ट वर्क, लाइक एनीवन शुड मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो अगर किसी ने सक्सीड नहीं किया तो एज पर द आर्ग्यूमेंट आई कैन से कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया होगा। कैसे दैट्स कैसे द रीजन आई। ऐसा हो सकता है कि उसने हार्ड वर्क करे और फिर भी सक्सेस ना मिले? इज दैट पॉसिबल? या दैट इज पॉसिबल, नो डाउट। हो सकता है। सेकंड केस वही था कि वर्क हार्ड करने के बाद भी वी आर नॉट श्योर, राइट, कि अब तक राइट। मिले कि अब तक ना मिले। तो अगर उसको सक्सेस नहीं मिली तो क्या उसने वर्क हार्ड करा हो सकता है? सर किया हो सकता है, बट एज पर द क्वेश्चन आई मतलब एज पर द आर्ग्यूमेंट आई कैन से कि उसने नहीं किया होगा मेहनत। हम ऑब्वियसली सर, मतलब अगर नहीं, हम स्टेटमेंट की ही बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपसे जनरल नॉलेज नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? इट वी आर नॉट डूइंग एनी जनरल नॉलेज स्टफ हियर। ऑन द बेसिस द स्टेटमेंट वी आर आस्किंग कि जब हमने सेकंड पूछा था, बट इफ यू वर्क हार्ड, द आंसर वाज कैन नॉट से, मे और मे नॉट सक्सीड, राइट? राइट। वो किस बेसिस पे था? वो स्टेटमेंट के बेसिस पे था कि स्टेटमेंट कह रही है कि वर्क हार्ड इज जरूरी फॉर सक्सेस, बट देयर मे बी अदर थिंग्स, क्योंकि स्टेटमेंट इज नॉट सेइंग कि अकेली चीज जरूरी है, राइट? राइट। So if the statement keeps it open, we cannot be sure that working hard will definitely lead to succeed, right? But sir, what I want to say is like in the question given, you must work hard in order to succeed. तो Correct. सक्सेस चाहिए तो मस्ट करना ही पड़ेगा आपको, देयर इज नो इफ एंड बट। नहीं सो इफ पड़ेगा। क्वेश्चन से राइट एंड क्वेश्चन व्हाट इफ यू वर्क हार्ड, तो इफ यू वर्क हार्ड then I think you will succeed. Now you are saying कि here we can using C something as extra knowledge कि अगर कोई और रीजन हो सकता है कि वो ना भी करे सक्सेस, नॉलेज बट की एज बात पर द नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज की बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे सॉरी प्रणव, तो मैं बोलता हूँ, अगर एक स्टेटमेंट बोलता हूँ प्रणव इज इंटेलिजेंट, ठीक है? राइट। आई मेक दिस स्टेटमेंट एंड देन आई आस्क यू कि व्हाट अबाउट सीजे, क्या बोलोगे आप? सीजे इज नॉट इंटेलिजेंट? नो ऑब्वियसली नॉट। आई कैन से he can be, he cannot be. व्हाई विल यू से कि ही मे और मे नॉट बी? मैंने आपको बोला था प्रणव इज इंटेलिजेंट, और मैंने फिर पूछा कि सीजे का क्या हाल है, सीजे इंटेलिजेंट, तो आप मे और मे नॉट बी क्यों बोल रहे हो? Because I don't know about you. क्यों? आपको दिया प्रणव इज इंटेलिजेंट तो मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे इंटेलिजेंट नहीं है। ये हो सकते हैं सर, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ, राइट। तो व्हेन वी आर राइट, व्हेन वी हियर अ स्टेटमेंट, वी अंडरस्टैंड कि ये दिया हुआ है और बाकी सब कुछ हो सकता है जो हमें नहीं दिया हुआ, राइट? राइट। दिस इज इट्स हाउ फिजिकल, या वी बिहेव, राइट? कि अगर मैं आपको बोलता हूँ राइट। प्रणव इंटेलिजेंट, यू विल नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम कि अच्छा फिर दुनिया में और तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है। और मैं आपको बोलूंगा कि सीजे मे और मे नॉट बी इंटेलिजेंट, तो आप हो गए यार ये तो आप बाहर की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं बोलोगे आप, राइट? बट सर जितना मतलब
जितना मेरे को पता है, what I know is that we have to stick to the question given, stick to the premise or fact given. बिल्कुल So सही that's है। why I thought, तो मुझे लगा इसी वजह से शायद ये हो सकता है। स्टिक टू द प्रेमाइस आइडिया अपने आप में ठीक है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है। स्टिक टू द this I प्रेमाइस think. का मतलब होता है कि अगर आपको बोल रहे हैं प्रणव इज इंटेलिजेंट, तो आपको समझ आ गया प्रणव इज इंटेलिजेंट, आपको ये भी पता है कि मैं किसी और के बारे में नहीं जानता। ये है स्टिक टू Right. द प्रेमिस। अब आप कह रहे हो कि अगर मुझे दे दोगे प्रणव इज इंटेलिजेंट, तो मैं स्टिक टू द प्रेमिस करूंगा और मैं मान लूंगा कि बाकी और कोई इंटेलिजेंट नहीं है। ये गलत है। Okay. ठीक Understood. है। तो वैसे Yeah, अगर आपको got कोई it, sir. बोलता है वर्क हार्ड जरूरी है सक्सेस के लिए, तो स्टिक टू द प्रेमिस का मतलब है आप कहोगे मुझे दिया हुआ वर्क हार्ड जरूरी है सक्सेस के लिए, और कुछ जरूरी है मुझे नहीं पता, बताया नहीं किसी ने, राइट। पर अगर आप मान लेते हो नहीं कुछ और चाहिए ही नहीं क्योंकि मुझे दिया हुआ वर्क हार्ड जरूरी है, फिर आप गलत चले गए। मेक सेंस? वो might be work hard किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है, both can be feasible. हाँ, हो सकता है Understood. वर्क हार्ड करके ना मिली हो सक्सेस, राइट। Understood. Understood, sir. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इफ यू हैव सक्सीडेड? आंसर्स अगेन ये तीन ऑप्शंस हैं, वर्क हार्ड, डिडंट वर्क हार्ड, कैन नॉट से। रिस्पॉन्सेस 7-8 ही आए हैं, बाकी कहाँ हैं, सो गए। Didn't work hard, PJ. Sorry, I आप wanted to say WH. So no, that's a typo. अच्छा मैंने कहा तो अलग ही आ गया पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो या द आंसर इज यू वर्कड हार्ड, क्योंकि दिया हुआ है वर्क हार्ड जरूरी है, तो जरूरी है तो मतलब अगर उसने सक्सेस मिली है तो उसने वर्क हार्ड करा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट was an example of a necessary condition. So a condition, let's say X is called a necessary condition for Y if Y cannot occur without X. कि X जरूरी है Y के लिए, तो मतलब Y X के बिना नहीं हो सकता। That is the meaning of necessary condition. Again, necessary, you don't have to remember the term, oh, it's a technical term. Necessary का literal मतलब ही जरूरी होता है, right? In real life also. That is the dictionary meaning of it. So it's not nothing technical about it. It's just common sense. Necessary का मतलब जरूरी है, बस। So if we are given that X is a necessary condition for Y, so we can say these four things. These four are the four things, the four cases we have already discussed about. These may not be in the same order. They're essentially the same four things we have already discussed. So just have a look at it for 1 minute, and then we'll move on to the next line. If you have any questions on this slide, please feel free to ask. So, sir, here in the statement, X is work hard and Y is success. Yeah, correct. You're right. यहाँ पे work hard was necessary for success. If anybody has any doubts, you may ask. ठीक है, तो आगे चलते हैं। Now let's look at example 2. So now this is a given statement here. Okay, so on the basis of this statement, you have to answer the questions. So again, 3 choices. You can type out your answers in the chat window.
Okay. So 8 responses. Yeah, 22 participants. A few more responses. I would urge you to participate. Okay, more or less cannot say yeah. Tanishk is saying no success. Tanishk, would you like to explain your answer? Why no success? So I just actually negated, like, if you don't work hard, you will not succeed. So like, if X happens, then Y will happen. If X does not happen, then Y won't happen. I kind of thought in that way. Okay, you kind of thought. So is there any problem with that thought? You tell me. नहीं वो तो मैं बता ही दूंगा. But I want you to think before I tell you. कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? ठीक लग रहा है ना अपने हिसाब से कि हाँ यार, if X happens then Y happens, so if X doesn't happen then Y wouldn't happen. Any problem you find with that if you think about it? Right. So I cannot point it out for myself. ठीक है, तो अगर let's say if I make a statement that if you jump from the 3rd floor you'll get a fracture. Okay. Sorry, my examples are a little weird. No. Yeah. From the 3rd floor you'll get a fracture. So let's say what if you If I don't jump, then I won't get a fracture, right? तो आपको लाइफ में कभी फ्रैक्चर नहीं हो सकता if you don't jump from the Yeah, मतलब हो सकता है, but on the statement I would say. हाँ, तो स्टेटमेंट तो यही थी कि इफ यू जंप फ्रॉम द 3rd फ्लोर तो फ्रैक्चर हो जाएगा. तो अगर कोई आगे बताता है यार कि 3rd फ्लोर से तो जंप नहीं करा, देन यू कैन बी श्योर कि फिर तो फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा. नहीं, hope it could have happened otherwise. Yeah. हो सकता है ना. Yeah, possible. तो सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि वो आपको एक तरीका बता रहा है टू हैव अ फ्रैक्चर, राइट? इट इज नॉट सेइंग दैट इज द ओनली वे. अच्छा. अगेन वी आर essentially making the same mistake or we are thinking along the same thing कि we should be clear कि ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ. हमको ये नहीं कह रहा ये अकेला तरीका है फ्रैक्चर का. मतलब अगर if I jump from the 3rd floor, then I will for sure get a fracture. If I don't, then anything could happen, could have lead to the fracture, right? हाँ, मतलब कुछ बोला नहीं है उन्होंने, फिर उस केस में क्या होने वाला है, right? Okay, understood. There may or may not be other ways to get a fracture. We don't know. उसने में बताया नहीं कि और तरीके हैं या नहीं. उसने बताया ये एक तरीका है फ्रैक्चर लेने का, right? Yeah, got it. ठीक है, cool. What if you work hard? Quick. यार वेट करा दो तुम आंसर्स को. ठीक है, तो सक्सेस एवरीबडी इज क्लियर. बस दिया हुआ है कि अगर वर्क हार्ड करोगे तो यू विल सक्सीड. तो व्हाट इफ यू वर्क हार्ड, दिया हुआ है दैट यू विल सक्सीड. ठीक है, बट इफ यू हैवंट सक्सीडेड, worked hard, didn't work hard, cannot say. Eight responses. A few more responses. Worked hard and work hard, cannot say.
यार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वेट करा के मुझे मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, सो डिडंट वर्क हार्ड के ही हैं ज्यादातर। प्रियम वाज सेइंग कैन नॉट से। प्रियम, वुड यू लाइक टू explain your answer? Yes, as in that person might have worked hard, but there could have been other factors ठीक है, which would have not led to success. राइट। तो आप कह रहे हो कि वर्क हार्ड कर रहा हो, क्या पता फिर भी कुछ और हो गया हो, सो ही माइट नॉट हैव सक्सीडेड। Yes. तो वर्क Yes. हार्ड के बाद भी सक्सेस गारंटी थोड़ी ना होती है, राइट? Yes. Is that idea aligned with what the statement is saying? आप कह रहे हो कि वर्क हार्ड के बाद भी सक्सेस गारंटी थोड़ी ना होती है, राइट? So, sir, as in if we compare the example one, नहीं नहीं, अभी उसको छोड़ दो, अभी वापस कंपैरिजन पे, अभी इस स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। आपने सेकंड में क्या कहा था, व्हाट इफ यू वर्क हार्ड में क्या बोला था आपने? सक्सेस बोला था या कैन नॉट से बोला था? success बोला था मैंने। सक्सेस बोला था, तो वहां पे सक्सेस क्यों बोला था? वहां पे आपने क्यों नहीं सोचा था यार कैन नॉट से, हो सकता है वो ही वर्क्स हार्ड बट डजंट सक्सीड? नहीं, वर्क हार्ड किया होगा तो सक्सेस तो मिलेगा ही। अच्छा, वो श्योरिटी है, X will lead to Y, X Y वाला सीन हो गया इसमें। वो इसमें श्योरिटी है, हाँ, पर वो श्योरिटी थर्ड में नहीं रह जाती फिर। why not will देखो lead। ये सब आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो अपना दिमाग, इस टेक्निकलिटी में घुस के वाई नॉट से एक्स नॉट होगा वगैरह वगैरह। सिंपली सोचो जो दिया हुआ है यार। देखो एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने आपको बताया था, इफ यू रियली गो बैक टू दैट, आई ऑल्सो टोल्ड यू इसका आंसर डिडंट वर्क हार्ड ही है। बट जैसे एब्स्ट्रैक्ट वे में आई टोल्ड यू कि एक्स और वाई के टर्म्स में एक्स इज अ नेसेसरी कंडीशन, तो ये चार केसेस है। बट आई टोल्ड यू दैट आफ्टर हैविंग रन थ्रू दैट एग्जाम्पल, मैं आपको ये पहले ही बता सकता था कि एक्स और वाई में ऐसा होता है, चलो इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। बट दैट वुड बी जस्ट रिमेम्बरिंग एन idea or a concept, not understanding it. But I want you to understand the thing in a commonsensical way, and then you can make it abstract in your mind कि अच्छा अच्छा x और y के टर्म्स में ऐसा होता है। But first you have to understand it in a very common sense way. It's a common mistake कि हम we think in terms of formulas. Then essentially we hide our ignorance behind those formulas or those abstractions. So don't do that. I'm not saying you do that, but it was an indicator to me कि यार अगर आप y naught x naught के टर्म्स में सोचने बैठ गए, again you will be using some formula that you have read somewhere. Just think directly. यार वो बोल रहा है कि वर्क हार्ड से सक्सेस पक्का है, अभी पहले ही आपने बोला है। तो अगर उसको सक्सेस नहीं मिली तो क्या उसने वर्क हार्ड करा होगा? आप कह रहे हो क्या पता करा हो, पर अगर करा होता तो सक्सेस पक्का मिलती ना, राइट? Yes. पर सक्सेस तो नहीं मिली है, राइट? तो विच Yes. मीन्स वर्क हार्ड नहीं करा होगा, राइट? Yes. Here we are just looking at the statement and trying to understand it. We are not using any x on y and not x not y जो भी जिस तरह से लोग सोचते हैं। Okay. Once you have really internalized it, understood it in a very commonsensical way that you can explain it to a child, then you can make it abstract in your mind कि अच्छा x और y के टर्म में ऐसा होता है। But then that will not just remembering something, that will be कि आपने पहले समझ लिया है, अब आप उस पर abstract वे में स्टोर कर रहे हो अपने दिमाग में। Make Understood, sense? sir. Yeah. So what if you have succeeded? Again, worked hard and work hard cannot say.
Key responses. Take your time if you want to take 10 seconds. Just think about it. Okay. Mainly cannot say. Mihir, you are saying worked hard. Would you like to explain? So इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने कहा था कि if you work hard you will succeed. So if you have succeeded you must have worked hard. स्टेटमेंट के हिसाब से ही कर रहे हैं सब कुछ. ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि मैं स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा था बट आंसर इज डिफरेंट. हाँ, तो आप क्या कह रहे हो? तो स्टेटमेंट के हिसाब से वो कह रहा है कि अगर वर्क हार्ड करोगे तो सक्सेस मिलेगी. तो आप कह रहे हो फिर सक्सेस मिली है तो पक्का वर्क हार्ड करा होगा. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yes sir. तो अब पहले पे चले जाते हैं. व्हाट इफ यू डोंट वर्क हार्ड? उसका क्या आंसर था आपका? Cannot say. क्यों कैन नॉट से? क्यों? व्हाई कैन नॉट से? मतलब वही लॉजिक समझ में आ रहा है कि if you don't work hard cannot say. दैट इज नॉट क्लियर. हम्म. तो क्योंकि वो कह रहा है अगर वर्क हार्ड करोगे तो सक्सेस मिलेगी. वर्क हार्ड नहीं करोगे उसके बारे में भी कुछ कह रहा हो? वर्क हार्ड नहीं करोगे तो हाँ मैं जो इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि नहीं मिलेगी शायद. हाँ, आपको लग रहा है कि वो नहीं मिलेगी, पर क्या स्टेटमेंट वो कह रही है कि अगर नहीं नहीं? स्टेटमेंट नहीं कर. क्या वो स्टेटमेंट कह रही है कि जरूरी है वर्क हार्ड? नहीं जरूरी तो नहीं. वो आपके दिमाग में गलत आइडिया चल रहा है, हम्म. right? Which is fine. You just become aware and then try to not repeat it as much as possible. So don't work hard के केस में हमें पता नहीं है. उसने बोला वर्क हार्ड के केस में ये होगा, डोंट वर्क हार्ड के केस में पता नहीं क्या होगा, राइट? दैट्स व्हाई वी जी सेड क्या हो सकता है सक्सेस मिले, हो सकता है ना मिले, हाँ सर. राइट? तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट केस, सक्सेस डोंट वर्क हार्ड में भी मिल सकती है, राइट? यस सर. वर्क हार्ड में तो मिल ही सकती है, पर डोंट हाँ वर्क हार्ड में भी मिल सकती है, राइट? बिल्कुल अगर किसी बिल्कुल. को सक्सेस मिल चुकी है तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसने वर्क हार्ड करा? कह सकते हैं शायद किया हो. शायद किया हो, शायद ना किया हो, हाँ सर. राइट? तो दोनों ही हो सकता है ना यहाँ पे. जी सर. डज इट मेक सेंस? यस सर. थोड़ा सोचना पड़ेगा आई थिंक आपको. नहीं सर मतलब सेंस बना रहा है. ठीक है, ठीक है. या प्रणव, यू हैव अ क्वेश्चन? Sir, like if the question is if you would have given you work hard you will succeed, in that case options कुछ और ही होते हैं, answers कुछ और ही होते हैं, because there is mentioned if is there, right? If you work hard, that's the reason you are taking both the cases, right? If you work hard you will succeed might be है कि अगर मैं नहीं भी work hard करता तो I can succeed, right? So because of if you are having two conditions, right? हाँ, That is मतलब मुझे पता नहीं कि दूसरे केस में क्या होगा, राइट? राइट. अगर मैं इफ यहाँ पे नहीं मेंशन करता सर, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता स्टेटमेंट में, देन तो एक ही कंडीशन होता हमारे पास, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड देन ओनली यू विल सक्सीड. नहीं तो इफ के बिना स्टेटमेंट क्या बनेगी? यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. स्टेटमेंट ही कुछ नहीं है तो टू सेपरेट स्टेटमेंट है जिसमें बीच में फुल स्टॉप आना चाहिए, हाँ. राइट? So this statement is an example of sufficient condition. जैसे इस केस में if you work hard you will succeed, तो working hard was sufficient for success. Sufficient का normal literal मतलब होता है enough. So x is enough for y if the occurrence of x guarantees the occurrence of y. Okay, that is the meaning of sufficient. कि x sufficient है y के लिए, कि x हो गया तो बस sufficient है, फिर y हो ही जाएगा. So if x occurs, we can be 100% sure that y will occur. That is the meaning of the sufficient condition. So if we are given that x is a sufficient condition for y, then we can say these four things. Again, ये चारों केस ऊपर वाले ही हैं.
spend a minute or so on this. If you have any doubts, you may feel free to ask. Okay. चलें आगे. Two yeses. That's all. Chala. So this is a summary of it. Now you can see the differences. If you want to see, again, spend a minute or so on this. If you have any doubts, you can feel free to ask. So now you can compare the two statements in the four cases. And if some of you are feeling that we are going a little slow, that was the intent. I think if you guys are comfortable, then we'll pick up pace as we go along. So whoever is done, you can just type in the chat window done. So I know that how many people are ready to move on. If you're done with this slide, just type done in the chat window so that I know that I can move on. Okay, what about others? So I have 9 responses here. Okay, so I have a question here. So you have two statements, statement 1 and statement 2. Any difference you can spot between statement 1 and statement 2? If you cannot spot any difference, you can just say no. Or if there is a difference, you can say yes, and then I may ask you to explain the difference. If you can spot any difference, you can say yes. If no, then no difference. So yeah, so there is no difference between the two statements. In general also, X is necessary for Y is equivalent to saying that if X doesn't happen, Y will not happen. These two statements are equivalent. So first means the second and second means the first. So they are interchangeable. Now, if you just compare it with sufficient, you will see that how there is a similarity in the way we can portray them.
So x is necessary for y means if x doesn't happen, y will not happen. X is sufficient for y means if x happens, then y will happen. So if x happens, y will happen, and if x doesn't happen, y will not happen. These two are actually not the same as some people think that, yeah, they mean the same. No, one is saying it's sufficient and the other is saying it's necessary. All clear? If you have any doubts, please feel free to ask. If you are all clear, then just let me know. So, sir, statement 1 is sufficient condition and statement 2 is necessary condition, right? यहाँ पे जो दी हुई हैं दो statements. हाँ. Statement 1 क्या है? Sufficient condition है. You must work hard. No. Necessary condition है statement 1 and statement 2 sufficient condition. But मैंने आपसे पूछा any difference, तो आपने बोला दोनों same है. मीनिंग सेम है सर उसका ना, अगर आप एज एन Hold on. So you are saying meaning same है, but फिर भी एक necessary एक sufficient है. Is that what you are saying? यस. Meaning same होने तो फिर necessary और sufficient दोनों मतलब same ही होता है. नहीं तो दो statements का meaning same है, पर एक necessary एक sufficient है. This is what you are saying. No, so to explain a bit more, sir. So statement 1 में X work hard, Y succeed. X is unnecessary for Y. Correct. Statement 2 में X is don't work hard and Y is. हाँ, देखो आप नेगेटिव बना रहे हो ना उसमें हम. Yes. तो फिर तो वो सब चेंज हो जाएगा सिचुएशन. फिर तो आप उसको फोर्स फिट एक तरह से एक्स और वाई कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो. बेसिकली आप सेकंड में कंस्ट्रक्ट उसको फिक्स कर रहे हो कि इफ एक्स हैपेंस था तो आपने कहा इफ नॉट एक्स हैपेंस कर दिया आपने, राइट? तो लेट्स नॉट गेट देयर. ठीक है. दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है और दोनों ही नेसेसरी है यहाँ पे. और नेसेसरी यहाँ पे जो है वो वर्क हार्ड सेम ही सेट. एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है. एक्स इज वर्किंग हार्ड एंड वाई इज सक्सेस, राइट? द वे यू आर थिंकिंग इज, तो आप एक्स को ही चेंज कर रहे हो. एक में एक्स इज वर्क हार्ड, सेकंड में एक्स इज डोंट वर्क हार्ड, राइट? yes. वी आर नॉट डूइंग दैट. Okay. ठीक है. that's a different level of complexity. We are not getting there, and normally I'll say कि we never need to get there. हम हमेशा पॉजिटिव से डील कर सकते हैं चीजों. Okay. So you see the parallel. Necessary is same as कि x नहीं होगा तो y नहीं होगा. इसको भी हम x और y के टर्म्स में तो if or then फॉर्म में लिख रहे हैं, बट इट इज नेगेटिव. x नहीं होगा तो y नहीं होगा, तो इट इज गारंटीड कि y नहीं होगा किस केस में, जब x नहीं होगा. When x is sufficient for y, then y is happening is guaranteed on the basis of x happens. Okay? So इसी को let's try to derive a few points out of this, इस understanding से. So let's say if x is necessary for y, does this idea make it likely that x is sufficient for y? If x is necessary for y, is it likely that x is sufficient for y? x जरूरी है y के लिए, क्या इससे ये भी हमें पता लगता है कि x इनफ है y के लिए? राइट. तो किसी का जरूरी होने से हमें ये नहीं पता लगता कि वो इनफ है. ठीक है. और भी चीजें जरूरी हो सकती हैं y के लिए. If x is sufficient for y,
Is it likely that x is necessary for y? अगर x enough है, तो is it also likely that x is necessary, compulsory है? What about others? Just 4 or 5 responses है. ठीक है, तो this is also not the case. अगर enough है तो जरूरी हो या ना हो, there can be multiple ways that are enough. जैसे फ्रैक्चर के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कार के नीचे आना, 3rd फ्लोर से जंप लगाना, वाइफ से आर्ग्यू करना, वगैरह वगैरह, राइट? तो doesn't mean कि it's a necessary also. So there can be lot of ways which are sufficient to get a fracture, but it's not necessary to get a fracture. ठीक है. So now these are a couple of statements. So if x doesn't happen, y will not happen. इसका मतलब है कि x necessary है y के लिए, right? इसका मतलब ये नहीं है, it does not indicate that if x happens then y will happen, which is a very common mistake people make. कि अगर मैं उनको बोलता हूँ if x doesn't happen, y will not happen, तो अच्छा फिर तो if x happens, y will happen. No. X, that is saying x is necessary for y does not mean that x is, or does not even indicate that x is sufficient for y. Again, the same thing which we have discussed in the first statement, first question here. Similarly, if I say x is sufficient for y, it does not indicate that x is necessary for y. So अगर मैं बोलता हूँ if x happens then y will happen, it does not indicate that if x doesn't happen, y will not happen. Okay, again, we are just building upon that understanding. If you have any doubts, please feel free to ask. Any doubts or all clear so far? Yeah, Anik. See, in terms of the last sentence that we had discussed, where if you don't work hard, you will not succeed. And there it was a necessary condition. So Correct. doesn't the opposite imply that it should work in that way? Like if you work hard, you will succeed. Like I get it that there are chances of you not working hard will not guarantee success, but I'm just confused on this part, as you mentioned here, that if it does not happen, then the opposite is not also necessary to not happen, or it will happen. Like that is what I'm asking. देखो वो क्वेश्चन वो फर्स्ट वाला ही है. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x जरूरी है y के लिए, तो डज इट इंडिकेट x इनफ है y के लिए? नहीं. तो उस लेवल पे आपको वो क्लियर है कि Right. जरूर ना एक अलग बात होती है. जरूरी तो जैसे अगर आप बी स्कूल एडमिशन की बात करें, जरूरी आपका GMAT स्कोर भी है, आपका वट प्रोफाइल है, वर्क एक्सपीरियंस है, रिकमेंडेशन लेटर है, बहुत कुछ जरूरी हो सकता है. बट Right. किसी भी चीज के जरूरी होने से इनफ होना का कोई रिलेशन नहीं है. Okay. राइट? Right. तो फॉर एग्जाम्पल मतलब राइट, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स कि अगर कोई चीज किसी चीज के लिए जरूरी है, तो लेट्स से मुझे मार्स पे जाने के लिए एक तो जरूरी है दैट आई शुड नॉट हैव एस्थमा, राइट? Right. लेट्स से इफ आई डोंट हैव एस्थमा, तो फिर आई विल बी एबल टू गो टू मार्स. ये तो नहीं बन रही ना. नहीं. Yeah. Okay. 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 Got it. Okay. तो बेसिकली
आई अंडरस्टैंड, तो मैंने इसलिए वहां से शुरू किया था, देन आई केम टू थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, बिकॉज थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, कि इफ एक्स Okay. आई विल नॉट हैपन, तो मतलब है कि इफ एक्स हैपन देन वाई विल हैपन। हाँ ठीक है, तो उस लेवल पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्वड, बट फर्स्ट स्टेटमेंट के लेवल पे समझना इट्स इजियर। Right. ठीक है, बट अब आपको यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन योर ओन, डोंट जस्ट टेक इट कि ऐसा नहीं होता। यू हैव टू रिकंसाइल दीज टू, क्योंकि दोनों ही थॉट आपके अंदर है। फर्स्ट को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो नहीं है, बट थर्ड में फिर भी आपका हंच आपको कह रहा है कि यार ऐसा होना तो चाहिए, राइट? Right. यू हैव टू सिट डाउन एंड रिजॉल्व कि क्या सही है, नॉट जस्ट से कि अच्छा बोला तो सही होगा, बट spend time on your own and think about it. If you still have doubts, you can just email me after the webinar and Sure. then Sure. that. Okay. Yeah. Anybody else? Any doubts? Clear so far? Can you just let me know if you're clear? ठीक है, चलें आगे. So let's say it is a statement, it is a fact given to you that X is a necessary condition for Y. And let's say X and Z का आपस में कोई relation नहीं है. Can Z be a necessary condition for Y? Is it possible कि Z भी necessary हो Y के लिए? हो सकता है, मतलब नो आइडिया का मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं आपसे. If it is possible, then the answer has to be yes. If it is not possible, that's a different thing. Then you say no. ठीक है, पॉसिबल है, राइट? हमें पता नहीं है और क्या क्या नेसेसरी है, तो हो सकता है Z नेसेसरी हो. इट इज पॉसिबल, एंड that's what the question is. Can Z, is it possible that Z? या पॉसिबल है, मतलब किसी ने हमें मना नहीं करा, राइट? If the question was, is Z a necessary condition, then you will say cannot say. You see, there is a difference between can and is. Can Z be a sufficient condition for Y? Again, yes or no. If it is possible, then you say yes. If it is not possible, then you say no. Tan, ta, tan, ta, tan, 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 tan. It's not possible. Congratulations. तो अब सोचो बैठ के, why is it not possible? Anybody who initially said yes but now have understood कि no होगा? Anybody who has understood?
who was initially wrong but has now understood, you know. कोई भी नहीं है? Yeah, Manvi, can you explain? So I was thinking in this way that, so in the first scenario, X is necessary. So X is necessary for Y. Like this is given. This is a statement. So we Correct. have some other factor, but it is also like one of the not the ingredients, but like one of the contributing factors for Y occurrence. Okay. But if at all it is the only condition required for Y, that we cannot say. Cannot say. So we don't know. Yeah. If we don't know, then not possible क्यों बोल रहे हो फिर? क्योंकि when we say no, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, this is not possible. That cannot be sufficient condition, right? It's similar to like if dieting keeps us healthy. So we Yeah. can't say that. Because that is not a necessary condition. Don't get there. The example you are taking is not valid. ठीक है? So dieting keeps us healthy, वो तो एक उसको मैं अगर बकेट करना भी है तो मैं sufficient में डालूंगा, necessary में नहीं डालूंगा मैं. The way it is phrased. Yeah, man, you want to say something? यस सर, हाँ मैं इस थॉट प्रोसेस से सोच रहा था कि अगर नेसेसरी कंडीशन है x is necessary for y, then as we were covering in the previous slides, it means that if x doesn't happen, then y doesn't happen. Correct. ठीक है, तो Correct. अब अगर लेकिन ये अब कह रहा है कि सपोज z होता तो फिर y भी होना चाहिए था. Correct. तो फिर मैंने थॉट प्रोसेस से सोचा कि फिर वो अगर एक नेसेसरी तो दूसरी सफिशिएंट कंडीशन उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकती. करेक्ट. करेक्ट. तो अगर x और z आपस में अनरिलेटेड है और x हम कह रहे हैं जरूरी है y के लिए, और कोई बोलता है कि नहीं नहीं z से भी पहुंच सकते हैं, तो अगर z से पहुंच सकते हैं तो फिर x जरूरी कहाँ रह गया? फिर तो z के थ्रू पहुंच जाओ. राइट, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है. Right? That would contradict the given statement. Right. So that is why it is not a possibility. Because if it is a possibility, it would contradict the given statement. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, AG. Who is this AG? Hey, CJ, this is Abhirup here. So, CJ, the way I kind of thought through is, so something like this, right? So we say that getting a 750 is necessary for getting a top rank in, let's say, M7 schools. Correct. Or you must be a Nobel Prize winner to get there. Something like that, right? So wherein, if I've kind of bifurcate this thought into two parts, one is either you be a Nobel Prize winner, which means it's sufficient, you don't need anything else, or else you get a 780, and then there could be other possibilities out there in that. That doesn't really guarantee you that you'll get into a M7 school. Maybe you need a good profile, you might need good recommendations. So, but if someone is at a M7 school, they could have come from like either of these two routes. So that's why that's the thought that went. Correct. So Necessary नहीं है 780, right? 9 Nobel Prize necessary है, 9 780 necessary है, because दोनों route से हो सकता है, right? That's but what you're saying? नहीं, मतलब 780 के साथ there could be other conditions. So we can say that 780. Oh, okay. Now I see where you're going at. You are saying that because there's another route, Yeah. 780 doesn't become a necessary condition per se. Okay, yeah, okay, yeah, makes sense. Yeah. Makes sense? Yeah. So you want to say, अगर x necessary condition है तो हमको फर्क नहीं पड़ता z sufficient है कि नहीं है, x is necessary, that's it. This is what you want to say? नहीं, not at all. I'm saying it's not कि हमें फर्क नहीं पड़ता. मैं कह रहा हूँ कि पक्का we can be sure कि z sufficient नहीं है. Okay. मतलब या वही मेरा मतलब बोलना था सर कि मतलब x, if x is necessary condition, so Yeah. z cannot be sufficient. Correct. It has to be necessary in that case? No. Yes, it has to be necessary in that case.
Z का हमें कुछ पता नहीं है नेसेसरी है या नहीं है, पर सफिशिएंट नहीं हो सकता वो, हाँ ओके, क्योंकि अगर वो सफिशिएंट हो गया तो फिर X नेसेसरी नहीं बच फिर जाएगा। नहीं हो सकता, राइट, बस, Make sense? यस सर। चलो अब सफिशिएंट के ऊपर बात करते हैं। If A is the sufficient condition for B, can C, which is unrelated to A, also be a sufficient condition for B? Yes, no? But about others? Yes, no? ठीक है, तो अगर ए सफिशिएंट है तो कुछ और भी सफिशिएंट हो सकता है। किसी ने मना नहीं करा है कि समथिंग एल्स कैन नॉट बी सफिशिएंट, दिस कैन आल्सो बी सफिशिएंट। कैन सी बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बी? Yes, no, no, yes. Okay. Yes. Five responses. The answer is no. So anybody who was saying yes want to talk about it? हेलो यासीन जी। Yeah, सो ए काफी है बी के लिए, correct. एंड समवन सेज सी जरूरी है फॉर बी, तो ठीक है भाई, होगा जरूरी। तो अगर C जरूरी है तो C के बिना आप B पे नहीं पहुंच सकते, राइट? हाँ, यस। और तो आप कह रहे थे कि A से हम B पे पहुंच जाएंगे, अच्छा अच्छा, ओके ओके। राइट? ए से बी में पहुंच सकते हैं, तो और एक बोल रहा है कि सी जरूरी है बी के लिए, तब दोनों फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। Yeah. ओके। बाकी अनय, प्रणव, क्लियर है? यस ठीक है। तो देखो यार, जो एक बिगर आइडिया है बियॉन्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट इज दैट कि अ बिग पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड दस रीजनिंग, 10 समझने वाला है, क्योंकि रीजनिंग में लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल बिकॉज देयर कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट वेरी क्लियर, और लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि उनको कॉम्प्रिहेंशन ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कह रहा है। उनको लग रहा है मुझे समझ आ चुका है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, हम तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की बातें कर रहे हैं अभी तक, राइट? इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट का क्या मतलब है, एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स एट दैट।
That's why this thus is important, क्योंकि बहुत सारे लोगों की problem is not even at the reasoning level, it's at the comprehension level. और उसका जो big part है is essentially being aware what you don't know. ठीक है, जैसे I think I was talking to Pranay कि sticking to the premise means कि ये मुझे दिया हुआ है और उसके अलावा I know कि मुझे और कुछ नहीं पता है. Everything else is open. Because a lot of people, as it is written here, many people assume कि जो नहीं दिया हुआ है, जो मुझे नहीं पता है, वो है ही नहीं. कि अगर बोल दिया प्रणव इज इंटेलिजेंट तो मतलब सीजे के बारे में पूछेंगे हाँ सीजे नॉट इंटेलिजेंट है क्योंकि प्रणव इंटेलिजेंट दिया हुआ. ठीक है, वैसे अगर आपको बोल देंगे एक्स नेसेसरी है वाई के लिए, कोई पूछेगा जेड नेसेसरी है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है. कोई पूछेगा कि इफ एक्स से वाई हो जाएगा, आपको बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि एक्स तो दिया हुआ है, एक्स से वाई होता है. तो उसने बोला एक्स जरूरी है, कुछ और भी जरूरी हो सकता है, तो एक्स से जरूरी नहीं है वाई हो. So comprehension has two aspects. एक तो दिया क्या हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है. It is essentially being clear about the boundaries. It is not just about कि ये दिया हुआ है, वो तो पता ही होना ही चाहिए for sure. But क्या नहीं दिया हुआ है, you should also be aware कि ये नहीं पता है. So I'll remain open with that. I'll not start assuming कि जो नहीं दिया हुआ वो नहीं है. So with that, एक official क्वेश्चन करते हैं sorry. So this is the official question जो यहाँ पे GMAT इंटेंसिव के स्टूडेंट्स हैं देख रखा होगा ये. बट फॉर अदर्स यू कैन डू दिस, और हो सकता है आपने भी देखा हो. आई लॉन्च अ पोल. You have to solve this and accordingly choose one of the four options. So you can say only A is the answer, only B is the answer, both are answers, which is also possible. Or you can say none of them is the answer or none of them can be inferred. Okay, so take about 2 to 2.5 minutes, attempt this question, and then we'll discuss it.
Okay, I'll end the poll in about 10 seconds. Okay, ending the poll now. Again, these are the results. So almost equally spread across the first three options. So इसमें यार, I'll right away get to the main meat of it. So it says the 5 specially ordered shipments sent out last week were sent out on Thursday. The 5 specially ordered shipments sent out last week were sent out on Thursday. So last week, do we know कि total specially ordered shipments कितनी भेजी गई थी? Last week, the total number of specially ordered shipments sent. Do we know that number? Last week, the total number of specially ordered shipments sent. ठीक है, तो वो 5 है. The way it is phrased, the 5 specially ordered shipments sent out last week, इसका मतलब है 5 ही भेजी गई हैं. तो the makes it clear that this is the whole set. तो सिर्फ 5 ही भेजी गई हैं and they were sent out on Thursday. ठीक है, दिस इज द मीनिंग. सिर्फ 5 ही थी स्पेशली ऑर्डर और 5 थर्सडे को भेजी गई हैं और ये 5 कंसिस्टेड एंटायरली ऑफ बिल्डिंग सप्लाईज. तो 5 ही हैं और 5 बिल्डिंग सप्लाईज हैं और 5 थर्सडे को सेंड करी गई. और 2x को बिल्डिंग सप्लाई सेंड नहीं हुई है. दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस, राइट. 2x को बिल्डिंग सप्लाईज नहीं गई हैं. सो वी कैन बी श्योर कि 2x को स्पेशली ऑर्डर नहीं गई है. सो ए इज करेक्ट, क्योंकि स्पेशली ऑर्डर्ड सारी की सारी बिल्डिंग सप्लाईज थी. ईच ऑफ दीज 5 ही थी, 5 बिल्डिंग सप्लाईज थी. ट्रू एक्स को बिल्डिंग सप्लाईज नहीं भेजेगी तो ट्रू एक्स को स्पेशली ऑर्डर नहीं भेजेगी. वी कैन बी श्योर अबाउट दैट. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन. नन ऑफ कॉमकॉफ शिपमेंट सेंट ऑन थर्सडे. तो थर्सडे को ये 5 स्पेशली ऑर्डर शिपमेंट्स भेजी गई हैं. इनके अलावा कोई और भेजी गई हैं? इन 5 के अलावा have other shipments been sent on Thursday last week? Okay, so it is important to be aware that we don't know that. So this cannot be inferred. हो सकता है बाकी भी भेजी गई हो, वो बाकी नॉन बिल्डिंग सप्लाईज हो और they might have gone to Truex construction, right? So again, comprehension is both being clear what we know and being also clear what we don't know. So जब Thursday की बात हो रही है तो we know these 5 were sent on Thursday. So we can be sure at least 5 were sent on Thursday. अगर कोई कहता है 4 were sent on Thursday, we'll say no, that's wrong. At least 5. But we are aware that there can be more than these 5. ठीक है, और भी भेज सकते हैं Thursday को. We are not given. That is also part of comprehension. Does that make sense? Any doubts? Or if you're clear, let me know. If you have any doubts, please feel free to ask.
बट सर यहाँ पे जैसे मेंशन है कि 4 shipment were sent to trucks construction last week, none Correct. of which consisted of building supplies. That Correct. means कि उसको 4 ही भेजी गई थी लास्ट वीक में, और वो बिल्डिंग सप्लाईज नहीं थी एक भी उसमें. सो उस हिसाब से देन बी, नन ऑफ द शिपमेंट सेंट ऑन थर्सडे ऑफ व्हेन सेंट टू ट्रक्स, बिकॉज क्योंकि बिल्डिंग सप्लाईज आई नहीं ना सर, क्योंकि उस पास 4 शिपमेंट ही आई थी उसके पास. तो उस हिसाब से तो फिर बी भी सही होगा. हाँ, करेक्ट. तो उसके बाद बिल्डिंग सप्लाईज नहीं आई, तो जो भी आया है नॉन बिल्डिंग सप्लाईज आया है, राइट. राइट राइट सर. तो नॉन बिल्डिंग सप्लाईज क्या थर्सडे को भेजी जा सकती हैं? बट थर्सडे को सर उसने 5 स्पेशली ऑर्डर शिपमेंट भेजी हुई हैं. करेक्ट. थर्सडे को वो 5 भेजी हैं, तो सिर्फ 5 ही भेजी हैं वो. हाँ वही सर, assumption I have made कि नहीं भेज सकते हैं. ठीक, अंडरस्टूड. ये मेजर पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है. ठीक है, मेक सेंस. Anybody else, any doubts or clear? Clear, not clear? One person is clear. Three are clear. Others थक गए, क्या हुआ? Should we stop? अच्छा, तो तो ये मैंने वीडियो बनाई थी. Why are all prime numbers of the form 6n plus 1 or 6n minus 1? ठीक है, तो you guys I think may be aware कि all prime numbers are of the form 6n plus 1 or 6n minus 1. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ रखा है. मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी that why is that the case, why are all prime numbers of this form. So then on that video I received these couple of comments, so you can read through. एक तो तिलक 20 का है. He is saying that 25, which is अगर हम n को 4 डाल देते हैं तो 6 into 4 plus 125 is an exception, right? That is his comment. और the second comment is कि अगर मैं different values डालता हूँ then there are cases in which these are not prime. So n को 4, 6, 8, 9 ये सब डालता हूँ then I'm not getting prime numbers. So given our discussion, what do you think, or how will you respond to these comments, or what do you think about these comments? Or you don't see any connection between our discussion and these comments? So 6n plus 1 or 6n minus 1 will not lead to prime numbers. Okay. Rather, prime numbers are in the form of 6n plus 1 and 6n. Okay. 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 तो you are saying कि जो बोला गया वो बोला गया कि सारे प्राइम नंबर्स इस फॉर्म के होते हैं, ये नहीं बोला गया कि सारे इस फॉर्म के प्राइम नंबर्स होते हैं. Yes. Right? Yes. Correct. Right? But this is a very common confusion which people have and they are asking doubts कि अच्छा ये तो exceptions हैं. Right? Of course, they didn't even doubt कि क्या बोल मतलब, right? And I understand it, but this is a very common doubt also. कि मैं ये बोल रहा हूँ कि all prime numbers are of this form and people start thinking कि अच्छा अच्छा ये भी होता है. ठीक है, जैसे हमने बात करी कि अगर मैं बोलता हूँ if x then y, तो लोग अपने आप सोचने में अच्छा if x, if not x then not y.
but they are different things, as we've already discussed. If X happens, then Y happens is a sufficient condition. X is sufficient for Y. If X doesn't happen, then Y doesn't happen. X is a necessary condition for Y. These are two separate things. Similarly here, all prime numbers are of this form does not mean that all numbers of these forms are prime numbers. But these are common mistakes. Okay, so we have already overshot our time. So एक तो और slide करते हैं. Then I'll ask you a question. We can continue this webinar tomorrow because I have some content to cover. But let's first do this question, and then possibly then we can sort of stop here and possibly discuss a few doubts, and then we'll continue with this tomorrow at same time, 6 o'clock, if you guys are comfortable with that. But let's first talk about this. So now the fact here is every lie about XYZ's company's financials originates from Amit. Do we have Amit here? कोई नहीं है, चलो good. So if a statement about XYZ company's financials originates from Amit, the statement is a lie. Yes. Can we infer this? If yes, if we cannot infer, then you say no. Others? So right, so we cannot infer this. जैसे हमारी डिस्कशन हुई तो हर lie अमित से निकलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी अमित बोल दे वो lie है, right? Every lie originates from Amit, but at the same time, some truthful statement could also be originating from Amit. So we are aware that we don't know this aspect, right? We are given that every lie is coming from Amit, but we are not given that nothing else is coming from Amit. Okay? So no is the answer. What about the second one? Yes, no. If it can be inferred, then yes. If it cannot be inferred, then no. Three responses. Okay, cool. So we have gotten to a stage, we are getting same answers. So yes, the answer is yes. तो अगर सीजे से आ रही है तो we can be sure कि वो lie नहीं होगी, क्योंकि सारे lies तो अमित से आते हैं, right? तो किसी और से अगर कोई भी statement आ रही है, so that cannot be a lie because we are given that every lie originates from Amit. Okay, so I have more content, and I think जिसको अगर हम कवर करने बैठे तो it may take us about 45 minutes to an hour. I think we'll continue with this tomorrow, same time, 6 o'clock IST. Good question. We'll share a new link. So yeah, just check my email. I'll try to keep the same link if that is possible. Nahi to I'll generate a new link. So if you don't receive an email, that means the same link.
ठीक है, can they overlap? Manvi, what does that mean? So is it possible that they're like both are making the same statement and both are lying? नहीं देखो, both are making the same statement. They both say तो company हाँ, hasn't both of them made could be profit. making the same statement, but originate तो एक से होगी ना? You understand? दोनों हम, you are saying कि जैसे आपने कुछ बोला and then I am also repeating the same, तो वो है तो झूठ ही, right? But originate तो आपसे ही हुआ ना फिर भी वो. Okay, sir. Like it's the word originate that has to be taken care of. Correct. Origination की बात हो रही है, वो let's say जिससे भी हो रहा है. It's not about saying. तो वो मेरे दिमाग में आया था वो डाउट जब मैं क्वेश्चन बना रहा था, तो I changed it to originate. Okay, got it, sir. Thank you. You're welcome. So the thing is कि again, as I said, we'll continue with this, but in any case, as soon as this meeting ends, you'll get a survey link. So please fill that survey up. Just share your views, how you found the session, आपके लिए helpful था, and आपके people like you के लिए अगर मुझे और helpful बनाना हो तो what can I do? So it's not really a feedback for me, it's about a feedback for the session. कि session को more helpful for a person like you, for more engaging for a person like you. So don't think कि अच्छा मेरे लिए चलेगा और मुझे बाकियों का क्या पता. So just write from your perspective. That would really help me, because one of the reason for taking this webinar is also to become better at it. And if I become better at it, I think future में शायद you will gain more from such sessions or others may gain more. ठीक है यार, so that is it from my side. Sir, We'll so continue. can I ask a question, sir? Yeah, I'm opening the floor. So we'll continue with this tomorrow. And if you have any doubts, any questions, now the floor is open. You can feel free to ask. Yeah. So why do you conduct this webinar? Obviously, ये हमारे लिए ही है, but what is the main purpose of yours? गुड क्वेश्चन यार. एक तो ये था सिंपली कि यार मेरे पास टाइम है. दूसरा था कि मेरे पास वैल्यू ऐड करने को है तो मैं कर सकता हूँ. तीसरा है कि जब मैं वैल्यू ऐड करता हूँ तो सम पीपल आल्सो ज्वाइन मी, सो आई आल्सो गेट बेनिफिटेड फाइनेंशियली. सर लाइक फोर्थ इसकी यार मुझे बात करने का दिल था. तो सर लाइक मैंने इससे पहले भी मतलब वेरी रिनाउंड फैकल्टी से मैंने पढ़ा है. यू मस्ट बी नोइंग हिम. मैं नाम आप इंडिविजुअली हमारी बात होगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. तो मैंने पढ़ा है तो सर इवन आई हैव टेकन लॉट ऑफ अदर क्लासेस एज इन लास्ट 1 ईयर. तो मैंने काफी किया. एंड जो बेसिक कन्वेंशनल वे होता है जीमेट में ना इंडिया में पढ़ाने का, जो मैंने नोटिस किया है, एंड इट इज वेरी यू नो इट्स वेरी आई वुड से दे मेंटेन द फुल प्रोफेशनलिज्म इन द सेशन, है ना. जहाँ पे मतलब हार्डली आई सी पीपल डिस्कस थिंग्स इतना ओपनली. एंड बिकॉज यू क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म, अरे भाई आराम से बात कर, कोई कोई लोड नहीं है. एंड वी आर इंडियंस एट द एंड, कितना भी हम कुछ भी कर लें. सो you have done this in this session. I don't know like this is how you conduct your own intensive sessions or not. So मेरा यही क्वेश्चन मैंने उसमें भी लिखा था चैट ऑप्शन में कि this is if you conduct your session like this, then I'm very much happy to go ahead for your intensive classes as well, because this is very interactive, not in sense of कि आप बात कर रहे हैं. It's the way the session you conduct the session. ऐसे नहीं होता है session conduct बाहर, जितना मेरे को पता है. Because I have taken in last 1 year, I have taken 2-3 classes from very good people around. So वही मेरा आपसे डाउट था कि this is how you conduct the pace and the way you interact with us and every student, और या थोड़ा अलग होता है. So इसीलिए मैं आपसे पूछ. नहीं, यहाँ पे लोग हैं already from our GMAT intensive. Priyam, you have taken live sessions? Yes, CJ, I have taken live Priyam sessions. has taken, so he can share. Yeah, so Pranav, if you want feedback, मैं आपको मेरा नंबर शेयर कर सकता हूँ. बट स्टिल यहाँ फोरम में आई विल से कि इंडीड जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं बात, वैसे ही लाइव सेशंस में हम लोग बात करते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली द वे ही टीचेस. एंड वन मोर चेरी ऑन द केक इज कि जीमैट इंटेंसिव का डाउट सेशंस होते हैं क्लियरिंग के, संडेज या सैटरडेज को होते हैं, मैं भूल गया हूँ. तो उसमें तो और ज्यादा अच्छे से होते हैं बात.
मतलब Understood. So sir, like, thank you so much, Priyam. यार, it's helped a lot. Sir, एक doubt ये था आपसे कि आप usually you provide intensive classes and then there is self-paced course, right? Pre-recorded videos. I think also you people provide, right? I think they are the two content which you people. अभी तक फॉर द लास्ट 1 year हम लाइव सेशंस ऑफर नहीं कर रहे थे एंड अच्छा, fortunately we are starting live sessions I think in mid of November. So in about 15 days we will see the announcement in a few days, 2-3 days. But हाँ, तो पहले अभी तक for the last 1 year only recorded sessions were available. But जी sir. in November we are launching a batch. Okay. And like if I want to especially join for like verbal classes, so how much time like will you wanna take for completing the whole verbal section? So देखो वर्बल में बात ये होती है कि हमारे सेशन तो लेट्स से 1 महीने में खत्म हो जाएंगे बट आपका मेन मतलब आप obviously वो तो may हाँ not sir, right, you may take 6 months, 8 months, 1 year, we don't know that. Every person is right. starting at a different level. तो बट हमारे सेशन Yes. से जितने भी 15-20 होंगे that will get over within 30-40 days. उसके बाद you will keep access to the recordings, you will have access to the portal for another 6 months. Okay. And a doubt session, sir, once in a week, like if I want to Once in a week होते हैं उसमें you have to first write down your doubt. तो वहाँ पे there is a comment section. ठीक है, okay. पहले आपको पोस्ट करने होते हैं डाउट्स, देन वी डिस्कस दोस डाउट्स एंड द रीजन कि वी डोंट टेक मतलब of course we have a live discussion but we ask people to post their doubts initially so that we have a more structured way to address, right? नहीं तो हर कोई वहाँ पे just on the spot बोल रहा है, that may not be very conducive for other people who are there in the office hour. ठीक And है, how long that session conducts, sir? Like for 1 hour? हाँ तो मतलब ऐसा कुछ वैसे होता नहीं है, एक घंटा नॉर्मली 1 घंटे का होता है बट वी कैन एक्सटेंड इट 2 hours ऑल्सो अगर डाउट्स हैं तो. Okay. Once a week. And what is price structure क्या है, sir, if you can discuss? तो यार ईमेल कर दो, you'll get to know, or you can check the website gmatintensive.com. ठीक है, वो ठीक है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा सर, मेरे को डाउट है. Once. Yeah. बहुत अच्छा था सर, it was such a great session, trust me. मतलब why am I saying this? It's not just because I want to impress you. There's no reason why I should do that. But the fact is, मैंने सर जम्बोरी क्लासेस लिया है, मैंने GMAT विज लिया है, and I have taken Sandeep and everyone, and trust me, it was very good. बहुत पहले से पता था आपके बारे में, but unfortunately मैं आ नहीं पाया, but today I have taken this, and ये भी मेरे को ये सीखना था conditional reason. That's the reason I have joined this. And yeah, it helped me a lot. It was a very different session I experienced today. Thank you so much, sir. It means a lot. Thank you. Thank you so much, Pranav. Yeah, Priyam, you want to say? yes sir. So sir, this building supplies question, I just checked अभी, it is around 750 plus का question है ये. So my doubt is कि मतलब how often या मतलब क्वेश्चंस आते हैं इसके सर, बिकॉज ओजी में कंडीशनल रीजनिंग्स के अकॉर्डिंग टू मी काफी कम क्वेश्चंस है एंड नहीं देखो, क्वेश्चंस देखो, एक तो ये कि इतने ज्यादा तो नहीं है जितने एलसेट में होते हैं, इफ यू कंपेयर. जी तो जितने अगर वो हैं भी, उतने भी हो सकता है आप स्पॉट ना कर पा रहे हो. ठीक है, क्योंकि आपने कभी उसको फॉर्मली इस तरीके से सोचा ही नहीं है, तो आपके सामने वो आगे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सोचोगे हाँ नॉर्मल स्टेटमेंट्स थी. यू अंडरस्टैंड? यस बट देखो, इन एनी केस मोर देन आई वुड से कि क्या ये कॉन्सेप्ट कितना मतलब कॉम्प्रिहेंशन में अगर इफ यू वर स्ट्रगलिंग इन आंसरिंग दोस क्वेश्चन, तो नॉर्मल हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश तो कर रहे थे, राइट? यस हम कौन सा एक बड़ा ही अजीब टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्मल स्टेटमेंट से तो थी, उसी को समझने की कोशिश कर रहे थे हम तो स्टेटमेंट तो आनी चाहिए समझ. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो मेरे लिए मतलब मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं कि कितना फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है करूँ ना. मैंने कहा हाँ, इट्स टेस्टेड, इट अपीयर्स एंड इट्स अ कॉमन सेंस थिंग व्हिच वी शुड नो, दैट्स ऑल. तो इसको बहुत टेक्निकली अप्रोच मत करो, जैसे बीच में आप बोल रहे थे एक्स नॉट वाई नॉट एंड ऑल दैट. जस्ट सी ये स्टेटमेंट का ये मतलब है, तो मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, दैट्स ऑल. ओके जी. या Ane, you want to say something? Hi, CJ, just have a doubt on the last question, the first case that we had discussed actually. Uh, if you don't mind, could you present the slide once?
I didn't understand why is it no actually, because they have mentioned that every lie about that company originates from Amit, right? So if a तो सारे statement झूठ, about हाँ एक बारी तो इसको हिंदी में बोलते हैं, तो सारे झूठ अमित से आते हैं, राइट? right, दैट इज अ मीन। right, तो क्या अमित से yes, कोई yes, आ सकता है? सारे Amit झूठ says से such, आते हैं। but about that company, everything what he's saying is a lie, right? नहीं नहीं नहीं, हमें बोला है कि सारे झूठ जो उस कंपनी के बारे में हैं वो अमित से आते हैं। Yes, यही कह रहा हूँ, सारे जो झूठ उस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हैं वो अमित से ओरिजिनेट होते हैं। yeah, exactly, yeah. क्या कुछ और भी अमित से ओरिजिनेट होता है? क्या कोई सच भी ओरिजिनेट होता है अमित से? With regards to that company's financials or something else altogether? उसी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर कोई सच है, क्या वो अमित से ओरिजिनेट हो सकता है? हो सकता है, that's not, it's possibility is there. हाँ हो सकता है ना, वो हम कह रहे हैं सारे झूठ वहां से आते हैं। क्या अब तक कोई सच भी आता हो? किसी ने मना तो नहीं करा, राइट? Okay, right, राइट। okay, okay. Okay, so the sentence was saying that specifically about the lies, but nothing about in terms of like the truth or anything of the other sort that can be possible. हाँ, जो अब आप अब कर रहे हो ना, ये आप उसको फ्रेमवर्क में डाल रहे हो कि अच्छा हाँ इसके बारे में कह रही थी, उसके बारे में नहीं कह रही। ये फ्रेमवर्क डाइसी होते हैं, थोड़ा सोच के इस फ्रेमवर्क में डालना। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव फ्रेमवर्क्स Okay, इन माइंड, वी पुट थिंग्स इनटू फ्रेमवर्क, देन वी थिंक यहाँ समझ आ गई, बट वो आई नहीं होती है। उसको अभी आराम से बाद में फिर okay, सोचना कि इसके बारे में क्यों नहीं कह रहा है, कह तो रहा है, कुछ तो कह ही रहा है वो। यू अंडरस्टैंड? right, So don't immediately put into that framework, अच्छा हाँ इसके बारे में नहीं कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, नहीं, just think about the statement आराम से बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है? Yep. Yep. What else? Who is next in line? AG? CJ, thank you for the session first. So my question is not related to this session, but GMAT in general. Can I ask it? Would I mind me asking it? हाँ हाँ, मतलब किस तरह Okay. क्वेश्चन है, what No, no, kind? no, yeah. So with respect to verbal, like practice, right? So I have completed available official questions, GMAT Club mein se. What I wanted to ask you is, do you recommend, from a CR and RC standpoint, practicing LSATs, or do you think there is a better source that can be used for practice? And a follow-up to that, in case you say LSAT. So I've kind of read that practicing LSAT papers, like using the papers, are better than practicing from GMAT Club, because the questions, I think there's a level that is maintained in the paper. So any thoughts around that? देखो, as far as CR and RC practice is concerned, तो पहले तो ये official questions अपने आप में बहुत ज़्यादा है। If you use them properly, so you may not need to go to non-official sources, non-official GMAT sources. But let's say चलो जो भी आपने use कर लिया है and you have done your best, till you have not gotten the required improvement. So now you need to go to non-official GMAT resources. Then non-official में LSAT official is logically, in terms of the correctness, LSAT official questions are better than any other non-official GMAT resource. लॉजिकली अगर आप सोचोगे, क्योंकि कम से कम वहाँ पे कोई लॉजिकली क्वेश्चन आंसर गलत नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि वो भी ऑफिशियल क्वेश्चन ही हैं। तो LSAT उस तरह से बेटर है किसी भी नॉन ऑफिशियल रिसोर्स से फॉर CR एंड RC। उसमें जो आपका क्वेश्चन है फॉर GMAT क्लब से करें या टेस्ट से करें, उसमें जो मेन चीज़ है कि आप दोनों से कर सकते हो। वो सेम क्वेश्चन GMAT क्लब पे भी होते हैं ऑफ कोर्स। जी में जब व्हेन यू लुक एट LSAT टेस्ट, तो वहाँ पे डिफिकल्टी ऑर्डर्स डिफरेंट होती हैं। तो नॉट एवरी LSAT क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अ टेस्ट। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट GMAT क्लब की कितने LSAT क्वेश्चन वहाँ पे इजी मीडियम भी पेस्टेड हैं। So in that way, there might be a bias. There may not be. I don't know. But essentially, if there are easy and medium LSAT questions on GMAT Club, then there is no difference between
doing it from a test or doing it from GMAT. Right. Okay. Makes sense. Like the reason that I'm kind of coming to at is like off late there has been a bit of, I don't know if it's a rumor, yeah, such में ऐसा है that verbal in general has become tough. The passages are dense. The like when I say passages, I mean the RC passages are dense. The CRs are long. So which people who have kind of given the test off late in the last couple of months have reported that they're more of LSAT like questions. मतलब, and not very sure again. It's a user specific thing or सच में ऐसा हुआ है तो and I think that's where I was kind of coming from. देखो जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए. तो 2017 में जब when I took my second GMAT attempt, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2013. तो जब सेकंड मैंने दिया था तब भी वन ऑफ द रीजंस वाज कि मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे GMAT बहुत चेंज हो गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं जाके. मैं किया था तो आई गॉट अ 780. तो मतलब मेरे को बहुत हार्ड क्वेश्चंस आए होंगे अगर मेरा 780 आया था तो. बट मुझे कुछ आउट ऑफ द लीग नहीं लगे थे कि भैया ये तो भाई क्या ही बातें हो गई यहाँ पे. इट वाज नेवर लाइक दैट. तो मुझे लगा था ठीक है यहाँ के वेरी हार्ड जो मेरे को चीम ऑफिशियल में वेरी हार्ड नजर आते हैं यहाँ पे मतलब हैं वो ऐसे क्वेश्चन पता. तो लोगों के सामने कई लोगों का एक्सपीरियंस नेचुरली अगर आप देखो 10,000 लोग अगर GMAT दे रहे हैं तो उसमें से 100 लोग ऐसे होंगे जिनके पास प्रपोर्शन ऑफ हार्ड क्वेश्चन फॉर वट एवर रीजन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन उस तरह के थोड़े ज्यादा आगे होंगे. अब वो लोग आगे एकदम से शोर मचाएंगे क्यों बहुत चेंज हो गया है क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो नॉर्मल था तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. तो आप तो सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हो जो शोर मचा रहे हैं. पर शोर मचाने वाले आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओवरऑल थिंग. That's itself a CR thing. या Got it. Yeah. Thanks for your response, CJ. Appreciate it. कूल. एनीथिंग एल्स मिहिर? Yeah, hi CJ. Thanks for the session. Just a quick question. Are you planning to launch a GMAT focused edition तो जो अब learning module? हाँ तो अगर लाइव सेशंस होंगे तो दे विल बी GMAT फोकस एडिशन होंगे. Okay, thank you. Yep. सेकंड मिहिर नाउ. सर पूछना था कि जैसे मतलब आपने जब तैयारी की थी तो मतलब एक्चुअली आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, केवल ऑफिशियल गाइड्स की कुछ और भी, मतलब जैसे कंसेप्ट बिल्डिंग सर कैसे हो पाएगा, क्योंकि टफ होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आसान होता है. तो मेरे लिए आसान था. नहीं सर मतलब आपने जैसे बोला कि आप इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे तो नहीं मतलब जैसे स्ट्रगल था. देखो मेरी स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रगल था. यू हैव टू अंडरस्टैंड माय रिटन इंग्लिश वाज ऑलवेज गुड. मेरा कैट मतलब कैट तो यार 2007 में दिया था मैंने. तब तो मेरी स्पोकन इंग्लिश वाज हॉरिबल. तब भी मेरा कैट में 99.98 था. वर्बल में मेरा 97 पॉइंट सम परसेंटाइल था. तो मेरी रिटन इंग्लिश वाज नेवर अ प्रॉब्लम बाय द वे. स्पोकन इंग्लिश में ही प्रॉब्लम थी. रिटन इंग्लिश एक्चुअली मेरी काफी लोगों से बेटर थी. तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आस्क कि मेरे कैसे इंप्रूवमेंट हुई. बट मतलब जो मुझे लगता है मेरी अब नेचुरली कई लोग पूछेंगे भाई तुम्हारी इंग्लिश बेटर थी ही क्यों क्या उखाड़ा था तुमने. तो वो मुझे जो लगता है मेरी बेटर क्यों थी क्योंकि इट्स नॉट कि मेरा इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट था बाय द वे. एंड कई लोग सोचते हैं कि अच्छा यू मस्ट हैव बीन रीडिंग अ लॉट. दैट वाज आल्सो नॉट द केस. आई एक्चुअली नेवर वेंट बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स. तो जो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी मैं पढ़ता था स्कूल में बस वही पढ़ता था. आई डिड नॉट रीड एनीथिंग नॉन फिक्शन फिक्शन एनीथिंग बियॉन्ड दैट. तो मैं आई वाज नॉट नेवर रीडर एट ऑल. तो इवन आई थिंक मेरे जो बियॉन्ड दी टेक्स्ट बुक्स रीडिंग थी वो स्टार्ट ही MBA सेकेंड ईयर में हुई थी. तो इवन गैट के बाद हुई थी. तो फिर मेरी इंग्लिश बेटर की होती. तो जो मेरी हाइपोथेसिस है मेरी अंडरस्टैंडिंग वो इसलिए है वो ये है कि आई वाज जो मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ता था आई यूज्ड टू बी थॉरली इन्वॉल्व. मेरे को बहुत मजा आता था. एंड आई यूज्ड टू रीड एवरीथिंग वेरी क्लोजली बिकॉज आई वाज जस्ट सो इंटरेस्टेड. और वो सब कुछ इंग्लिश में ही होता था राइट बिकॉज हिंदी मीडियम में नहीं था मैं. तो बिकॉज वो सब कुछ इंग्लिश में था एंड आई वाज जस्ट सो इंटरेस्टेड इन दो सब्जेक्ट्स कि मैं हर वर्ड हर चीज पे ध्यान दे रहा हूँ कि अच्छा इसने ये बोल दिया इसने वहाँ पे वो बोल दिया. आई थिंक दैट इज द एक्सप्लेनेशन आई हैव कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी की होती रिटन इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ दैट. और स्पोकन इंग्लिश तो इसलिए बोली थी बिकॉज आई वुड नेवर स्पीक इन इंग्लिश. घर पे भी नहीं बोलता था स्कूल में भी बोलता था जस्ट. सो तो बेसिक जो मेरा रीजन था इम्प्रूवमेंट का था ये था कि आई वाज सो इंटरेस्टेड इन द मैटर नॉट इन इंग्लिश बट इन वट एवर
subject matter I was reading. That is what really improved me, and that is also the way you can improve in anything. अगर आपको वर्बल भी सीखनी है तो अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपका माइंड नेचुरली बहुत ज़्यादा सीखेगा. इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व, बस टेस्ट के लिए कर रहे हो कि यार खत्म हो जाए लाइफ में, तो इम्प्रूवमेंट मुश्किल होगी. As far as resources are concerned, तो यार एक हमारा कोर्स है GMAT इंटेंसिव है, GMAT इज अ गुड कोर्स, टारगेट टेस्ट प्रेप इज अ गुड कोर्स. तो ये 3 कोर्सेज हैं यार, मैं रेकमेंड करता हूँ. उसके अलावा वर्बल के लिए, वर्बल के क्वांट के लिए भी यार, क्वांट के लिए शायद और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, बट दोनों के लिए यार, क्वांट और वर्बल दोनों के लिए. और सर मतलब क्या आप रिकमेंड करेंगे, जैसे इकोनॉमिस्ट बहुत लोग बोलते हैं पढ़ने को जीमेट के लिए, तो आपके हिसाब से मतलब क्या सजेशन है कुछ? तो पढ़ सकते हो यार, मतलब बात वही है कि देखो, इट्स नॉट अबाउट कितना पढ़ रहे हो. पढ़े तो आज तक लाइफ में बहुत ही हो, राइट, बहुत कुछ पढ़ रखा है. तब भी अगर बहुत नीचे है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग में प्रॉब्लम है, द वे यू आर रीडिंग. तो अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे तो उसी तरीके से पढ़ोगे, इट वोंट चेंज मच. बात है कि द वे यू रीड चेंजेस, एंड देन यू जितना पढ़ोगे उतना बेटर है. पर पहले यू हैव टू चेंज द वे यू आर रीडिंग, एंड देन यू कैन रीड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल टाइम. जितना पढ़ोगे फिर उतना ही फायदा. ओके सर, मेनली आपका कहना है कि इन्वॉल्व हो जाओ जो भी चीज करो. हाँ, इन्वॉल्व होना क्या होता है, इन्वॉल्व होने से क्या होता है, वो एक अलग डिस्कशन है. तो उसमें कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे. जी, ओके 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 सर, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं तो कल मिलते हैं सेम टाइम 6 o'clock. Any other questions? And I'll share the recording, so if you guys have anything, some things are not clear, you can just go through the recording. That might also help you before our meeting tomorrow. Okay, if nothing else, I'll leave. Thank you so much for attending and staying till the very end. Thank you, CJ. See you guys tomorrow. Take care. Bye, good Bye-bye. night. Good night.